Hello and a very good morning to everybody. Today in this practice session, we will learn about a very important experiment called colorimetry. So basically, the word colorimetry comes from the word color. We all know that color means whatever information that we perceive in our naked eye, that is called color. Like whatever we see around in our surroundings, the color that is the sense that is perceived by us is the color information that we get. So basically, what is actually color? If we try to define color in a very like wonderful way, basically it's the perception that is being received by the human eye in the visible light spectrum. That means color information is concerned or is basically focused on the visible light spectrum, and the major objective or the aim of this experiment, which we will do today, like uh, like we said, the colorimetry, is how can we mathematically quantify the particular colors that we perceive around like all around us. So how we can numerically describe that color is basically the experiment of colorimetry. Like for example, I have two pens. Okay, if I have two objects or two pens or whatever objects are there, then it is very important for us to note that those objects are same or not. So if they are same, then the numerical values will automatically come same. But if they're different objects, then the values will be different. So in the latest slides, I'll show you what exactly are we talking about. And most importantly, the colorimetry is based on the principle of reflective spectrophotometry, which means in very simple terms what happens. Suppose we have this as an object, okay, and this is a light source. So what happens? Light falls onto the object, and we know that object has a property to reflect. So the reflected light gets detected or sensed by the detector, and that is basically processed, which is called signal processing, and ultimately we get the desired color information. Now, why will this experiment? What is the reason for this? Because, for example, you are not being able to understand, like for example, you want to understand the adulteration of a food product. Let's say milk. You're not being able to detect with the naked eye, like whether the milk is good or bad, or whether the milk is really adulterated or not. So from the color information, we can get a lot of things that whether the milk is pure or impure. And this is a new revolution in science and technology right now in this era. So basically, if you talk about this reflective spectrophotometer, what happens is that we know that different materials, they will reflect different amounts of light at different wavelengths, which means at different wavelengths, different reflections will come. And that will be detected by the detector. That is, whatever reflected light will be reflected by the object, that particular amount of light will be detected by will be sensed by the detector, and that will be giving us information about the optical properties or the optical attributes of a sample. And therefore, we are concerned about the color information of this and also the spectral information, which we will show you in the experiment. And most importantly, already you have studied in your theory classes about spectrophotometer. Just a brief overview. Basically, if we talk about the difference between the spectrophotometer and the colorimeter, in spectrophotometers, we are concerned in the UV and visible region. But if we concern about colorimetry, it is only concerned in the visible range or in the visible radiation. That is approximately 400 to 7 nanometer. Most importantly, another most important point, as already it is explained to you in the class, that spectrophotometer, the wavelength, that is the particular wavelength is being selected by a diffraction rating, which is called a monochromator, right? But in case of colorimeter, it's a color filter. So if you can recall or remember about the color wheel that we have studied in your theory classes, the same principle is being followed in this particular colorimeter. Okay. And most importantly, sensor, data processor, and a computer is there, and some differences are always there. But most importantly, if we understand about the cost or about the use of colorimeter is much easier to use, much easier as compared to spectrophotometer, and it can give a lot of information, but the surface information. It is very important that whatever object we take, we will get the surface information, but not the inside information. For that, we need more advanced spectrophotometers. And as we are talking about color, as we're talking about the most important aspect is color, what is the features that describe a color? There are three main features. Okay, first is called hue, then is called saturation, also it is called chroma when the CIE lab was introduced by the International Commission of like illumination, and then we have the lightness. So first of all, I will explain one by one what is there. Hue means
there is a what color we are trying to perceive, like whether it's yellow, whether it's blue, whether it's green. So hue is basically what type of color does the object represent and what type of color we are perceiving in the naked eye, that is called hue. Then we have saturation of chroma, which means the intensity of the particular color, whether it's bright, whether it's dull. Like for example, what we say, dark yellow, light yellow, it is called saturation. And lightness means the degree of the black or gray, that is how much intensity of the white or black it is. So if it's a, as we will see basically, we have a parameter called L star, which will come as I progress on the slides. So lightness means how much dark or how much lighter the color will be. That is the degree of lightness or luminosity index. And most importantly, here I will just describe a thing. First, the perception of color was not clear enough. But in the early 20th century, a scientist called Albert Munsell, he was the first person to describe color in terms of hue, chroma, and saturation. Now, most importantly, first, what he divided the color into 10 different hues. Okay, 10 different hues are there. Like there are four, like five primary colors: red, green, blue, yellow, and other colors, and purple. And what he also divided into several combinations. Now he divided those hues, 10 different hues, into 100 hues. That means he tried to build up the color wheel, which he have already studied. So the first person or one of the pioneers of color science or color information science is the Munsell color chart or the Munsell color information. But the practical problem of Munsell color chart was that it could not give us a mathematical numerical value or mathematical expressions that how to calculate the color of an object. You can't say it's dark or it's light. How much dark? How much light? This particular information is missing from the Munsell color chart. We can only get about the type of the information of the color. But the degree or the numerical value of the color that we are trying to achieve, that is basically done by the CIE lab parameters or the CIE LAB, which was given in 1976 by the International Commission of Illumination. So this is basically the color information or the method that we will use today, where there are three parameters: L star, A star, and B star. Now, most importantly, there are lots of scales. This is called color space. Color space means it's a three-dimensional space where different colors are represented together in terms of three parameters: hue, saturation, and lightness or intensity of the color. Okay. Now, most importantly, if we talk about L star means the degree of lightness. It ranges between 0 to 100. Okay. It is between 0 to 100. Then we have the A star. So A star means it's the degree of green or red. So if your A star value is in the positive axis of the color space, then it will represent the degree of redness, that how much red it is, red shade or red tint. But if we consider about the negative axis, we will see that A star is a green in nature, like greenish tint is there. You will understand when you do the practical. And B star, when we say, it's a yellow-blue scale, degree of yellowness or degree of blueness. So as we move towards the positive axis of the color space, it will represent yellow. As we move towards the negative axis, it will represent the blue space. And this is your entire color chart. If you can see from there, if you can see very well, this is the color space or the chromaticity one of the chromaticity diagrams that we use basically in order to calculate the CIE lab parameter. Now, what is basically it presents? If you see, if you say the L star, see it starts from 0 to 100, means how much lighter it is. That means how much luminous your color will be. If you move towards the x-axis, you will see that the color is shifting, right? See, 180 degree, it's green. Here, it's red. So depending on your A star, depending on your B star, it's a three-dimensional color plot. You can actually quantify how much degree of color a sample is having and what type of color it is producing. That is the beauty of CIE lab color space. And we have lots of notations, like first of all, we have del L star, this is the difference in the lightness or darkness value. We have A star and B star, these are all things. And one more important thing, we have two derived parameters. One is called the whiteness index and this is called a yellowness index. So these two parameters and also one of like del E parameter, these all are called derived parameter. Why? Because
These derived parameters, they are calculated on the basis of your L star, A star, and B star values. So this is basically an experiment where we will try to gather information of the color that is being reflected by the object. That is the basic principle of your reflective spectrophotometry, or in other terms, we can say colorimetry. And most importantly, why it is now being very used in research, like not only in our lab but also in other industries. First of all, I'll give you a very good example. Suppose you want to test any food object, and you don't know, or you know that chemical analysis is a lot of time and money. So you can use this colorimetry to understand whether your food product is really adulterated or not. This is the first one. Second is, in paint industries, you will see like in Berger paints or whatever paint companies use, dark yellow, light yellow, then ochre yellow. How these are done? These are actually tested by the colorimetry, by the help of colorimetry. Because with the colorimetry, they quantify this L star, A star values, and then they mix the colors based on the color wheel. Based on that only, your color will be developed. Another third point is pharmaceuticals. Like it's nowadays it's very useful whenever we are trying to develop different kinds of drugs. If you want to study about the impurity of a drug, so if you go for chemical test, time, money, everything is involved. But if you go for a color information test, it will just give a fraction of seconds. So within a fraction of seconds, you can get a lot of information and you can analyze using this colorimeter. Okay, and so we have lots of applications. So today what we will do, we will go to the practical session, and then we will learn how to apply this colorimeter principle in order to obtain the optical properties and the color information of different samples. Okay. Let's do this then. We'll start our practicals. Okay, so one more thing, I'll just explain you another important aspect. Okay, so this is also important. I'll just explain you this part. So once again, a very good morning to all of you. Today, after this, we have learned about the colorimeter principle. This is very important. There is the field of statistics. Now, before I go to this particular PPT, I just like to highlight one thing. Without statistics, there's nothing. Why? Because whatever data that we get in our daily lives, whether you go for it like AI, ML, data science, whatever, if you don't apply statistics, you will not be able to understand the validity of a data, or how can you interpret a data that is basically a guide for you. So statistics is what? Nothing but a guide to interpret and analyze your data based on whatever you want to achieve or interpret. So first of all, statistics basically is the branch of science that which deals with the collection, interpretation of data. And you've already studied, lower like pie charts, bar charts. Why do we do it? Like, why do we go for bar charts or pie charts? In order to represent the data. Like, we can't like rely every time on numerical data. So in order to present your data in a categorical manner, we have to statistics. So statistics basically what? Like suppose you are like in your class there are 50 students. You want to know the average height of a person. So what do you do? We, as in lower class, as I studied, first we group them according to the heights. Then we make a tally table, and then we can make a histogram plot or a bar graph plot or any plot that you want based on a distribution. It's called the frequency distribution chart. So statistics basically deals with the interpretation, validation, and also understanding of your data, like whatever data you're working on. And also it helps to convert from a raw data to a group data, that is called the categorical data. Now, briefly I'll just explain. Statistics basically is based on two types. One is called the descriptive method and another is called the inferential method. Now, descriptive method means when you are trying to have a qualitative analysis. That is when you're not going for the numerical quantification of any statistical data. But if you want to understand whether a data is significant or not, that means suppose I am going to give a simple example. Let's say you have an X drug. You think that this drug is effective for cancer cells. Now, how will you validate the drug? So you will do a test, let's say NTT assay or any assay they will do. Now, you have to validate that data that whether the drug you're having is significant, is it having an effect? In order to in order to assign that whether it's significant or non-significant, you have to perform this statistical analysis. That is statistical testing or parametric, non-parametric testing. Okay. Now, you have already studied about normal distribution, right?
So what is the beauty of it? The beauty of the normal distribution is that it's a symmetric distribution with a bell-shaped curve. This is basically called the probability density function. I'll just tell you very briefly. Whatever data that we deal upon, it basically has a distribution. Okay, and everything depends on probability. Whether you toss a coin, whether you play, whether you not play, everything will depend on probability. Now, probability has two types of distribution. One is called the mass probability mass function, another is called a probability density function. So this is basically a example of probability density function, where you see the fx is a continuous function. That is, if you want to have the value of it, you have to integrate this particular function. Then only you will be able to get the probability, not the actual probability, but the probabilistic probability of this particular part. And moreover, this normal distribution is very important when you are dealing with any kind of biological data. Whatever biological data we get, we have to see whether it's a normal distribution or a non-normal distribution, because otherwise we'll not be able to apply the parametric and the non-parametric testing. So if we consider in general, hypothesis means what? Like, I'll explain it very simple. Suppose you think that drug X is your drug. You are suppose thinking that drug X is working on cancer cells. So that means you are assigning a null hypothesis. So there are two kinds of hypotheses. One is called the null hypothesis and this is called the alternate hypothesis. Null means you are thinking that yes, that drug is particularly having an effect and that drug can work on cancer cells. Alternate means just the opposite. It is not happening. So how will you verify? How will you testify? So first, in order to verify or testify your data, you have to go for a testing called normality testing, which I will show you in the next part. Okay. Normal testing means your data is actually following a normal distribution or a non-normal distribution. So remember, if your data follows a normal distribution, you will use parametric testing. So if your data follows a normal distribution, you will use parametric testing. But if your data follows a non-normal distribution, you will use non-parametric testing. Okay. So what are the examples of parametric testing? One of the best examples of parametric testing is the Wilcoxon-Kruskal-Wallis test followed by Dunn's test, which I'll explain in the part. What is it basically that? And if you go for the non-parametric testing, it's a non-normal distribution. But if you go for the normal distribution, we will use ANOVA followed by 2P test. Now, basically what happens, suppose you get a data. Now, how will you do it? How will you analyze? First, you get a data. Okay, let's say you get any data. The first thing will be you have to apply the normality test. Okay, that's how the flowchart works. First is you get a data. You first test whether the data is normal or non-normal. Now, if the data is normal distributed, that means the data will follow parametric testing. Which one? This is the ANOVA, analysis of variance, followed by the post-hoc petty test. Now, what actually it is? Basically, variance means it's the square of standard deviation. That is how much data is deviated from the mean. That is that we are doing. So first, it will be able to identify a significant difference between the groups. But the problem is, if you don't apply this post-hoc test, we will not be able to analyze it pair-wise. Like samples, suppose 5 samples are there, A, B, C, D. We have got a bleak idea that yes, samples without drug, they are having no effect on cancer cells. Samples with drug, the cancer cells are dying. But suppose you want to understand the concentration of the particular thing. Suppose 5 samples, let's say 1, 2, 3, 4, 5 milligram you're getting. Now, out of this 5 data, like whatever drug you've applied, which one is the most significant? How will you apply? By using the post-hoc test. So post-hoc tests are actually important. Why? Because in order to have a pair-wise analysis or a pair-wise comparison to get the actual significance, there is which concentration of your drug will actually work on your cancer cells in order to statistically identify. But suppose you analyze from the normality test that no, my data is a non-normal distribution. How will you prove it? There is a value called p-value. Okay. If your p-value is greater than 0.05, remember this part. If it's greater than 0.05 or equal to 0.05, it will follow a normal distribution. It will follow a normal distribution. But if your data in the normality test lies below 0.05, there's a p-value. This is called the Shapiro-Wilk test. The normality test, basically, the name is called the Shapiro-Wilk test. So
if you get a data where the Shapiro's test you perform and then you get p less than 0.05, that will go for your non-normal distribution. And for the non-normal distribution, what I've told you, non-parametric testing. So for the non-parametric testing, we will use Wilcoxon Kruskal-Wallis followed by Dunstan. The same thing, because we want to understand which sample is actually significant or not. That's why without statistics, we will not be able to validate any data that we get from our experiments. This is the overview of the statistical analysis. Device normally what happens is that it's a non-invasive technique. इसका मतलब है कि मतलब हम लोग सैंपल को कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम लोग ऊपर से ले रहे हैं। तो इसका सरफेस में जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, तो मान के चलो ये जो तुम्हारा सैंपल्स है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन आएगा, ये इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे 6 सैंपल्स है, 1 2 3 4 5 6। एक तुम्हारा ब्रेड, तो ये तुम लिख लेना, मतलब तो हम लोग बता देंगे, ऑलरेडी बता देंगे। We will tell you what samples are there. We have bread, so you लिख दो bread, we have cookie, तो bread भी है, cookie भी है। यहाँ पे तुम्हारा केक भी है, we have cake, we have 2 types of oleogels, हमने तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया था एक्सपेरिमेंट 2 का, and नूडल्स। हम लोग एक एक करके सबका 3 रीडिंग लेंगे। हाउ टू टेक, आई विल शो यू। फर्स्ट ये डिवाइस का हम देख लेंगे। पहले ये डिवाइस क्या है, देखो ये जो कोलोरीमीटर डिवाइस, ये हमारा सीनियर ने बनाया, लाइक इट्स अ लैब डेवलप्ड कोलोरीमीटर। नॉर्मली कोलोरीमीटर्स कम अराउंड 10 to 15 lakhs, but it is hardly 60,000. It was a device developed by our senior Deblu sir. So we are applying it. We are trying to understand what is the importance of the machine or this colorimeter technique. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा सरफेस पे अगर मान के चलो कोई ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट तुम बनाए जिसमें मिलावट है, उसको तो केमिकली बहुत डिटेक्ट करने टाइम लगेगा, उसमें रीजन लगता है, पैसा लगता है। ये एक जब घुसाओगे, मतलब अंदर घुसाओगे, उसका अपने जो भी थोड़ा सेटअप है, तुमको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। मतलब हम लोग को 3 पैरामीटर से देखना है, एल स्टार, ए स्टार एंड बी स्टार। उससे हम लोग ऑलरेडी बताए, वी कैन कैलकुलेट अबाउट डब्ल्यू एंड वाई। ऑल्सो I'll show you how to perform an experiment we write down called hyperspectral imaging. इसका मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, 340 नैनोमीटर से 830 नैनोमीटर तक, मतलब पूरा विजिबल रेंज का मोटा-मोटी देख सकते हो, विजिबल रेंज का हम लोग क्या करते हैं, we take the pixel information of every wavelength, उसको हम क्या करते हैं, फाइनली एनालिसिस करते हैं। मतलब each and every pixel is being taken into account. That is called hyperspectral, means we are taking the spectral information of every pixel of the image. Like अगर तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हर एक पिक्सल का ये करेगा, हर एक पिक्सल का इंफॉर्मेशन लेगा। क्या लेगा, स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 चीज है इसमें, एक तुम्हारा सेंसर, एक हमारा लाइट, जहाँ पे लाइट आएगा, क्योंकि लाइट नहीं देंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो कैसे काम करेगा। देखो, दिस इज सैंपल होल्डर, दिस आर कॉल्ड 35 मिलीमीटर पेट्री डिश, लिख लेना 35 मिलीमीटर पेट्री डिश। हम लोग क्या करते हैं, सैंपल काटते हैं, कभी कर सम अकॉर्डिंगली, वी पुट द सैंपल्स हियर एंड देन व्हाट वी डू, वी कनेक्ट विद द प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम में ऑलरेडी किया गया है, उसको कनेक्ट करना। तो मैं एक एक दिखाऊंगा, तुम लोग लिखते जाना कि कौन सा सैंपल कर रहे हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू कनेक्ट दीस 2 थिंग्स, लाइक दिस इज द सेंसर एंड फर्स्ट one for sensor and one for your light source। देखो लाइट आ गया, इसको कनेक्ट करना है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट वी विल, लेट्स से वी आर टेकिंग योर सैंपल फर्स्ट। दिस इज द क्या नाम है, सी स्टार ना, सी डैश। सो सी डैश इज द नूडल्स, लिख लेना, तो लोग लिख लेना सी डैश। सो हाउ विल यू डू, सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल गो फॉर द पाई चार्ट। पाई चार्ट is basically interface where we code for the Python, like कोई Python कोड अगर करोगे तो Python is the interface for that। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करेंगे पहले इसको, ये पूरा डिवाइस, कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करना है मतलब कंप्यूटर है। हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये करेंगे, पाइचार्ट करेंगे, दिस इज द पाइचार्ट। सो इट टेक सम टाइम। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी है, लाइक इफ यू नो अबाउट कोडिंग, आई थिंक तुम समझ पाओगे, जो लोग जानते नहीं वो अलग बात है। कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी होता है, लाइक देयर आर डिफरेंट लाइब्रेरीज जो तुम्हारा प्रोग्राम को कॉल करेगा। लाइक अगर कोई इंटीजर प्रोग्राम है तो इंट होगा, अगर नंबर प्रोग्राम है तो नंबर होगा। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बूटिंग, स्कैनिंग मॉड्यूल्स। क्या करते हैं वो मॉड्यूल को स्कैन करते हैं, लाइक व्हाट आर द मॉड्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, इट विल बी स्कैन्ड ऑटोमेटिकली बाय द पाइथन इंटरफेस।
पाई चार्ट एंड देन वी विल हैव टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। तो पहले इसको होने दो, मैं एक एक दिखा रहा हूँ एक स्टेप, कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज स्टॉप कीजिए। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, देखो स्पेक्ट्रोमीटर करेंगे, ठीक है, रन स्पेक्ट्रोमीटर कोड, हमको बस कोड रन करना है। तो ये कोड आ जाएगा तुम्हारा, ये जो किया गया है इट इज बेसिकली एंड लाइक इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइस। अब तुम बोलोगे सर क्यों, क्योंकि एक तो हम सैंपल को डिस्ट्रॉय नहीं करना, नंबर वन। दूसरा है कि इसी इंफॉर्मेशन से हम लोग बहुत जल्दी निकाल पाएंगे कि हमारा कोई भी सैंपल में मिलावट है कि नहीं, कोई भी सैंपल में। सबसे बड़ी बात है लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेड, कुकी, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्पॉइलेज, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, खुला तुम देख नहीं पाओ, तुमको फिर माइक्रो टेस्ट करना पड़ेगा, मान चलो अंदर पैसा नहीं है, यू आर रिसर्चर, यू हैव मनी, कैसे करोगे इस, देखो ये आ गया है। अब हम क्या करते हैं, देखो मैं पहले तुम्हारा नाम दूंगा सी स्टार सी डैश, तो पहले हम ऐसा करेंगे सी डैश मैं लिख रहा हूँ, मैं पहले लिखने के बाद ग्रुप 1 GR1 सी डैश, हम लोग ये चेंज करेंगे उसको ग्रुप 3 हाँ ये बोलना है, हाँ ये बोलना मतलब कौन सा तुम्हारा ग्रुप है, सी डैश, ठीक है। और ये अंडरस्कोर 1 का मतलब है रेप्लिकेट का मीनिंग क्या है, रेप्लिकेट का मीनिंग है हम एक ही सैंपल का बार बार लेते हैं, क्यों, टू रिड्यूस द स्टैटिस्टिकल एरर और द रिड्यूस द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि एक बार लेने से कभी हम एवरेज कर नहीं पाएंगे, so इसीलिए टू रिड्यूस द स्टैंडर्ड एरर ऑफ योर डेटा you have to take minimum 3 times, it is called triplicate। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लिकेट बोलते हैं। रेप्लिकेट हम बोलते हैं फॉर नम, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल रेप्लिकेट। टेक्निकल का मतलब क्या है, सेम सैंपल का हम डिफरेंट रीजन में उसको लेंगे, इसको टेक्निकल। बायोलॉजी का मतलब क्या, तुम इस सेम सैंपल बार बार कर रहे हो, लेकिन नॉट टेकिंग वन एट अ टाइम, यू आर टेकिंग मल्टीपल टाइम्स, देन इट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल रेप्लिकेट, ठीक है। हम लोग टेक्निकल रेप्लिकेट में करेंगे। ये तुम्हारा हो गया। अब एक्सपोर्ट हम लोग कहाँ करेंगे, जब तुम लोग ने ऑलरेडी फोल्डर बनाया, तो व्हाट आई विल डू, दिस इज योर फोल्डर लाइक लैब प्रैक्टिकल कोलोरीमेट्री, मैं सबको दे दूंगा, टेंशन नहीं है, यहाँ पे ग्रुप 3, सो आई एम सिलेक्टिंग द फोल्डर। नाउ वी विल कम टू द आरओआई। आरओआई का मतलब है रीजन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब तुम कितना एरिया तक, हाउ मच एरिया यू आर रिक्वायरिंग इन ऑर्डर टू गेट द डेटा। जितना बड़ा एरिया होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लाइक मोर इन्फॉर्मेशन मिल गया। सो स्टैंडर्ड नॉर्मली हम लोग 51 मतलब 51 सेंटीमीटर बाय 51 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मैं तुमको दिखा दूं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो हम आरओ सेलेक्ट करेंगे, सो फर्स्ट इज आरओ, ठीक है, फिर ओके करेंगे, ओके हो गया। अब यहाँ पे एक दो चीज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक का मतलब है नो कलर, ब्लैक का मतलब मीनिंग है कोई कलर नहीं है, व्हाइट का मतलब मैक्सिमम कलर। ये व्हाइट से क्या होता है, विबजियोर, राइट, सो ऑल कलर्स का मिक्सचर। अब तुम पूछोगे कि सर हम लोग कैलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्यों कैलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि कलर है। अगर मान के चलो एकदम कोई कलर ही नहीं है, कलरलेस सैंपल है, ठीक है, कोई कलर नहीं है, तो उसको पता चलेगा इससे कि ब्लैक मतलब कोई कलर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक मीन्स नो कलर, ऐसा नहीं है। हर सैंपल को हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द मशीन अंडरस्टैंड कि हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसा समझ में, चलो हम एक एक करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलिब्रेट ब्लैक करेंगे। सो फर्स्ट वी क्लिक ऑन द कैलिब्रेट पर सिंगल क्लिक, तो यहाँ पे आ गया। बस इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे आराम से करना है, मतलब जो देख रहे हो स्क्वायर जो आ रहा है, देख रहे हो, इस स्क्वायर के अंदर में करना, नहीं तो बाहर आ जाएगा, आरओआई का बाहर आ जाएगा, याद रखना ये वाला। सो व्हाट विल डू, विल सिंपली इंसर्ट दिस पार्ट, बस ये हो गया। एक क्लिक करना है, क्लिक क्यों करना है, दिस इज योर आरओआई, दिस इज अ सैंपल रीजन, दिस इज आरओआई। ये आरओआई में तुम्हारा सब डेटा आएगा, बस इसको क्यू दबाना है, कैलिब्रेट हो गया फटाफट, ठीक है, गुड। नाउ वी गो फॉर द कैलिब्रेट व्हाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा सैंपल्स का, हम लोग 6 सैंपल्स है ना, सो वी विल टेक ईच सैंपल 3 रीडिंग्स एंड आल्सो वी विल गेट द स्पेक्ट्रल डेटा अकॉर्डिंगली फ्रॉम हियर इटसेल्फ। फिर हमको दिखाएंगे हाइपर स्पेक्ट्रल। तो यहाँ पे हो गया, ये क्या है, ये व्हाइट है, व्हाइट नहीं है, पिंक है, तो पिंक होगा नहीं, जानबूझ कर क्या है, ये व्हाइट है, व्हाइट कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलर प्लेकार्ड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं कलर प्लेकार्ड। कलर प्लेकार्ड मतलब these are tiles, standard color tiles that are used basically for calibration purposes. color placards, PLACARDS placards। देखो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, यू दबा देंगे, काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, देखो समझ आ रहा है सब कुछ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलना।
अब हम ये वाला करेंगे, इसमें कलर कम ही आएगा, ये तो नूडल्स है, तो नूडल्स लाए, तो जो आएगा जो तुम लिया हो वही नहीं, कोई बात नहीं, मसाला डालोगे तो ऑब्वियसली कलर चेंज होगा, डेफिनेटली इट्स अ गुड आइडिया। अच्छा अब क्या करना है, देखो देखो, अच्छा यहाँ पे हमको क्या करना है, कैप्चर इमेज स्पेक्ट्रल इन्फो, हम लोग इसको दबाएंगे, स्पेक्ट्रल इन्फो, ये आ गया, ये देखो फोकस आ गया। अब हम इस पे करेंगे, पहले इसमें करेंगे, तो हम लोग क्यों दबाएं, देखो आ गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस, कितना परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड परसेंट रिफ्लेक्ट, तुम देख रहे हो ना, देखो 340 से 834, दिस इज द स्पेक्ट्रल डेटा। हम लोग दो डेटा हमको निकालना है, एक कलर डेटा मतलब एल स्टार, ए स्टार, बी स्टार, देखो जो तुम्हारा यहाँ पे आ गया है, ये क्या करते हैं, आरजीबी स्केल से कन्वर्ट करते हैं बाय मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है, हम जिसको बोलते हैं नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसी से कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, अभी नहीं जा रहा, मैट्रिक्स वगैरह इन्वॉल्व होता है, बट ये वाला जो है ना, इसको इंपॉर्टेंट है हमारा, ये और ये दोनों को इंपॉर्टेंट है, कि हमको इससे पता चलेगा कि सैंपल का रिफ्लेक्टिव और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कितना है, समझ आ गया, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सेम सैंपल का करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, हम लोग इसको बस 2 दबा देंगे, यहाँ पे ओके मारेंगे, स्पेक्ट्रल इन्फो करेंगे, क्या करना है, इसमें तो हम लोग सैंपल चेंज नहीं कर सकते, इसको घुमा देंगे तो तुम्हारा पोजीशन चेंज हो जाएगा, जैसा मान लो कि मैं ऐसा थोड़ा घुमा दिया इसको, थोड़ा ऐसा ऐसा, देखो मैं ऐसा घुमाना है, देखो देखो ना, ऐसा घुमाना है, तो ऐसा घुमाना है थोड़ा, तो घुमा दिया, तो कोई भी रीजन में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम लोग, देखो हो गया तुम्हारा, देखो नूडल्स का भी कलर आ गया, देख रहे हो, एकदम व्हाइट नहीं है ये, देखो येलोइश शेड आ, टिन जा रहा है, समझ में आ गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो परसीव कलर मतलब क्या, कलर हम लोग परसीव करते हैं, दैट इज एज अ रेप्लिका, इट इज लाइक परफॉर्मिंग, ह्यूमन जो परसीव करते हैं, जो हम लोग अभी बताए, कलर व्हील, कलर चार्ट, हो गया। 3 रीडिंग लेना है, तो हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, ओके, स्पेक्ट्रल इन्फो, और मान के चलो थोड़ा घुमाना है, इसको घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो घुमा देंगे, ओके करके हो गया। इसका क्या करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे तो किसी जगह पे करेंगे, तो ये तुम्हारा 3 डेटा आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको नेक्स्ट सैंपल करना है, तो टाइम लगेगा, मैं फटाफट दिखा रहा हूँ, तो समझ गए ना कैसे करना है, जैसे आई एम डूइंग फॉर यू नाउ। तो ये हो गया तुम्हारा सी स्टार, सी डैश हो गया, तो ये होगा सैंपल 2 लिख तो बाद में बता दें कौन सा सैंपल है ये। सो दिस इज कुकी, ये की कुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 है, तो ग्रुप 3 क्या करेंगे बोलो, 2 1 मतलब फर्स्ट रेप्लिकेट, अंडरस्कोर 1 मतलब फर्स्ट रेप्लिकेट, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज वी मस्ट कीप इट ट्रिप्लिकेट। देखो अभी कैलिब्रेट कुछ करना नहीं है, अभी बस स्पेक्ट्रल इन्फो जाना है, बस उसको लेना है, काम खत्म हो गया, बस प्रूव करेंगे फटाफट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है, इसका एनालिसिस डिफिकल्ट है, इजी नहीं है मतलब comparatively easy as compared to other experiments, but you have to be very careful while you are doing this, क्योंकि देखो पोजीशन चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा बोलो, तो मेरे को एक बात बताओ, if your position does not change, if you don't change the position, what will happen, तुम्हारा बार-बार सेम एल स्टार ऐसा आएगा, तो वो डेटा गलत है, there should be variability in your data, नहीं तो you are fabricating your data, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो अब अलग अलग रीजन में लेंगे, ऊपर में लेंगे, ये कुकी है, हो गया, फिर 3 करेंगे, ओके करेंगे, स्पेक्ट्रल इन्फो, समझ में आ गया ना कैसे करना है, बस हम लोग करते जाएंगे इसका। हो गया खत्म, ये तुम्हारा कौन सा हुआ, ये 2 हो गया सैंपल, एक एक बताना जाना कि कौन सा सैंपल हुआ है, ओके, नाउ वन बाय वन यू कम, चलो अब गौरव कुमार करो मेरे सामने, बहुत सेकंड है इसको, सब लोग को चांस मिलेगा, करो जो वहां पे, देखो सबसे पहले ऐसे मत देना, हेलो कैमरा है, एक काम करो, इस पे क्लिक करो, देखो कैसे करते हैं, नहीं इसमें हाँ, अभी क्या करना है, देखो सैंपल डबल क्लिक मत करना, सैंपल तो वहां पे, अब आओ डबल मत करो, देखो आ गया ना, अब उसको क्या करना है, एक सिंगल क्लिक करना है, यहाँ पे करो, हाँ यहाँ पे करो, क्यू दबाओ, हो गया आसान कर, तो एक 3 हो गया, मतलब तो ना क्यू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, एक एक करके करो, गौरव का हो गया, फिर
अंजलि बेटा, हाँ उसको बाहर निकालो, जब भी सैंपल हो जाएगा उसको बाहर निकालो। ये कौन सा सैंपल? हाँ ये तुम्हारा कुकी था। कुकी। पिछले वाला भी कुकी था। तो ये तो आई थिंक ब्रेड है, ठीक है ब्रेड है ये, कोई बात नहीं, मुझे दे देंगे। अच्छा ये कौन सा सैंपल है? 5, तो सैंपल 5 को कोई बात नहीं है। तो अभी लिखो कि यहाँ पे लिखो 5, हाँ 1 2 लिखो 5, नहीं यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, ठीक है 5 का 1 करना है। देख लेंगे अगर नहीं होगा तो हम लोग और एक तुमको रीडिंग देते हैं, टेंशन नहीं। सबसे पहले क्या करना है, हो गया ओके मारो, ओके दबाओ, स्पेक्ट्रल इन्फो मारो, ठीक है। अब क्या करना है, बस सिंगल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक, क्यू दबाओ, हाँ हो गया, चुटकी में हो जाएगा। अभी 2 करो, 1 की जगह नहीं यहाँ पे करो, क्लिक करो, ये करो, 2 मारो, ठीक है ओके मारो, प्लस सेकंड रेप्लिकेट हो रहा है। अब स्पेक्ट्रल इन्फो करो, हाँ अब उसको बाहर निकालो, बाहर निकल कर अगर घुमाओ हाथ से, हाँ जो भी है, हाँ बस इसे घुमा के देखो कि घूम गया, देखो घूम गया ना। अब एक जो भी पोजीशन तुम्हें लगेगा अच्छा लगेगा वो क्लिक करो, सिंगल दबाओ, बस हो गया, क्यों दबाओ, हो गया। फिर यहाँ पे 3 करो, सबको मिलेगा चांस, ठीक है 3 हो गया, फिर ओके दबाना, हाँ ये मत भूलना, ठीक है। फिर उसको स्पेक्ट्रल इन्फो क्लिक करो, हाँ ये हो गया, फिर हाँ इस पे क्लिक करो, समझ आ गया कैसे करते हैं। फिर हम लोग ये करेंगे, घुमाएंगे उसको, फिर why we are taking different positions so that variability of data comes into action, ठीक है। तो एक मिला, ठीक है बाद में कर लिया, लास्ट में पहले टाइम नहीं है ना, समझ में आ रहा है। एक क्लिक करो, ठीक है बस क्यों दबाओ, हो गया खत्म। अब उसको बाहर निकालो, अब कौन आएगा, ज्योति आ जाओ, सबको मिलेगा चांस, आओ बैठो। अच्छा अब लिखो सैंपल 3, ठीक है सैंपल 3, एप्सिलॉन, अच्छा उल्टा कर, एप्सिलॉन लिखो, ये ऐसा एप्सिलॉन के ऐसा लिखते हैं ना, ये तो 3 लिख रहा है, नहीं और तुम साइन दे दिए, स्माइली दे दिए क्या, ये अपने नहीं यहाँ पे ये तुम्हारा ग्रुप 3, यहाँ पे लिखो ई लिखो, नहीं यहाँ पे इसको अंदर करो, यहाँ पे लिखो ई दबाओ, ई लिखो, सिंपल कैपिटल ई लिखो 1, ठीक है समझ में आ गया। 1 मतलब फर्स्ट रेप्लिकेट, ओके स्पेक्ट्रल इन्फो कर, कैसे करना है बोलो, कैसे करना है, अंदर करो सैंपल। ये कौन सा सैंपल है? ये तुम्हारा ये केक का सैंपल है, हाँ रख दो, एक काम करो इसके साथ, हाँ एक बात बताओ, ये कवर के साथ क्यों नहीं रख रहे, तुम लोगों को क्या लगता है? नहीं तुम करो, तुम करते जाओ, नहीं हाँ रिफ्लेक्ट करेगा, वो ऑब्जेक्ट पे जाएगा ही नहीं, दैट्स व्हाई वी डोंट डू। अभी क्लिक करो, हाँ हो गया, क्यू दबाओ, फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म। अब यहाँ पे क्या करना है 2, हाँ हो गया, ओके मारो, स्पेक्ट्रल इन्फो करो, उसको बाहर निकालो, थोड़ा घुमाओ, फिर घुमाओ उसको हाथ से, साइड में दो, गुड समझ गए कैसे करना है। यहाँ पे करो, हाँ क्यू दबाओ, बस एक्सप्लोर आसान है, कुछ में नहीं है, चुटकी में हो जाएगा, बट एनालिसिस डिफिकल्ट है। हाँ फिर और घुमाओ, ठीक है हम लोग का कितना हुआ, 1 2 3 4, तो हम हार्डली हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर इसका करेंगे हाइपरस्पेक्टिव इमेजिंग, ठीक है वो उसको मैं दिखाना है, हाँ 3 बार हो गया, तुम्हारा हो गया, फिर हाँ अच्छा कौन करेगा अभी, याद रखो, so you come like take all the sample, अच्छा now write sample A, this is the oleogel, okay these 2 oleogels divided by oleogels, okay small a rewrite, हाँ स्मॉल ए यहाँ पे क्या होगा 1 होगा ना, 1 करना है, और इसको खुला मत रखना, कोई बात नहीं है, स्पेक्ट्रल इन्फो दबाओ, ओके सिंगल क्लिक। अभी क्या करना है, ठीक है वो अभी एक्चुअली ओके बेट नहीं करोगे तो ऑलरेडी वो फिक्स हो जाते हैं आरओआई, बट हम लोग करते हैं ओके फॉर श्योरिटी, ठीक है। क्यों क्या करना है बोलो, क्यू दबाओ, हाँ धीरे धीरे, थोड़ा धीरे इसको, नहीं अभी क्या करो 1 2, सर ओके सर, वही ज्यादा दबाया ना, ओके सर ओके नहीं कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है तुम लोग को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं है।
तो कैलिब्रेट करना आता है सबको? तुम आ जाओ, फिर पूर्वी आ जाओ। तो ये 1 हो गया। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर रहा हूँ। दिस विल टेक सम टाइम। मैं बता रहा हूँ, बैठो यहाँ पे। मैं थोड़ा रुको, मैं थोड़ा ये करना आई चेंज कर देता हूँ। हाँ ठीक। तो याद रखना, जब भी तुम लोग करोगे ना इसको, ये वाला होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ बूटिंग टाइम। अगर इसमें तुम दबा दोगे ना तो ये प्रोग्राम हैंग कर जाएगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? देलू सर, दैट इज कोई हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई। ओके, देखो क्या करना है, राइट क्लिक दबाना, रन ऑटोमेटिक रखना। आ गया, बैठो। अभी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स डालो। यहाँ पे तुम डालो कि हम लोग कितना तक किए थे। ये ऐसा करो, GR3 जो भी डालो, नाम डालो GR3 ए। हाँ GR3 ए ना GR3 रे। अच्छा, जो भी है अंडरस्कोर मारो 1, ठीक है? या 1 मतलब फर्स्ट डुप्लीकेट दबाओ यहाँ पे। ग्रीन। क्या करना है, डेस्कटॉप में जाओ, यहाँ पे देखो ब्लैक पेंटेड कलरिमेट्री, ये वाला ग्रुप अरे डबल क्लिक करो उसको, डबल यहाँ पे सिलेक्ट करो ग्रुप 3। सिलेक्ट फोल्डर। नहीं, इसको सिलेक्ट फोल्डर करना है ना बाबा जी। सॉरी, यहाँ पे क्या दबाना है? अरे पहले पिला RY दबाओ, 51x51। हाँ दबाओ, उसको दबाओ यहाँ पे। ओके मारो, ओके ओके। ठीक है? कैलिब्रेट ब्लैक सीखो, पहले कैलिब्रेट कैसे करते हैं। ये ब्लैक होता है, ब्लैक कलर करो यहाँ पे दो। क्यों दबा मुझे याद है। ये एक्चुअली जो कॉस्ट होता है इसका 15 लाख से 20 लाख होता है एक कॉलोरीमीटर का इंस्ट्रूमेंट, बट इट इज हार्डली कॉस्टिंग 60,000, उससे भी कम। जैसे लैब डेमो यहाँ पे मॉडल में करना, क्योंकि हाँ अभी क्यों दबा ये बनाया जिसके बाद दिमाग कितना दिमाग कैप्स्टक ऑन था। अब ये करो, अब फिर वाइट वाला। हाँ वाइट वाला मेरे हाथ में कैप्स्टक ऑन मत करना, ठीक है? सो कैपिटल पे लिखते हैं बट कैप्स्टक ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो जाएगा वाईफाई तो ऑन कर, वाईफाई तो नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, अभी कुछ नहीं हो सकता। शायद इधर नेट नहीं आ रहा था, छोड़ दीजिए, तो भी काम चल रहा है ना। तो भी ये वाला है ना, वो तो नहीं है यहाँ तो नहीं हो सकता, अभी तो है ना साइड में है। वो देखिए पीछे अभी सैंपल डाल ये वाला हो गया ना। अभी ए वाला सैंपल डालो, अभी देख लीजिए सैंपल। हम लोग एक फर्स्ट रेप्लिकेट किए थे ना, दोनों का बनर बचा है बस। हाँ हुआ नहीं था पहला वाला। पहले वाला तो हुआ नहीं था, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ करो, ओके ओके दबाओ यहाँ पे। हाँ फिर से बटन, क्योंकि नहीं कोई भी रीजन पे क्लिक करो। क्यों अब क्यों दबाओ, हो गया हो गया। फिर 2 और फिर तुम किसका बचा है, और मेरा बचा। तुम्हारा बचा है, तो तुम लास्ट सैंपल करोगे, ठीक है? हाँ ओके कर रही है ओके नहीं उसे घुमाना ना, हाँ ठीक है। घुमा कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूज कर रही है हाँ बट ओके कर लेना। हाँ ओके कर दो। स्पेक्ट्रम हाँ फिर हाई पास फिल्टर सीखेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ ठीक है करो, क्यों दबाओ, ओके। अब तो क्या, अरे उसको तो हम तीन करना है ना। अभी और घुमा। हाई पे टोटल करना है। हाँ हाँ एक एक इमेज से लेके छोड़, मैं जाऊँ सबका इमेज में एक छोड़, उसका अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा उसके लिए। मैं सोचा नहीं हाई पास फिल्टर करवाएगा, बोलने पर नहीं, कुछ कर नहीं सकते। हो गया, हो गया। अब तुम आओ, अनुप्रिया तुम आ जाओ। टाइम लगेगा, क्या करेंगे सर, टाइम तो लगता है इसके लिए, थोड़ी होगा क्या कौन का कॉल करें, कौन कर क्या तो रुको, तो क्या ऑन कर लैंड तो लगा है। हाँ। अरे इसको ऑफ, नेट ऑन करो। ऑन हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी होगा। आ जाओ अनुप्रिया, तुम आ जाओ, बैठो। हमको क्या करना है, सी सैंपल सी, ये भी ओरिजिनल है, ठीक है? सैंपल सी अभी तक कैलिब्रेट करना नहीं है, उसे खुला रखना है, इसको सैंपल सी कर दो।
बहुत सर को पूछिए तो सर एक बार हाइपोथेटिकल कितने तक करना है? नहीं सब सैंपल करवा लेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कब छोड़ेगा? ऐसे ही तुम करोगे तो एक दो बार तो तुम नहीं होगा, 11 बजे ठीक है एक काम करेंगे, एक ही सैंपल करवा के छोड़ देंगे। एकदम टाइम लगेगा, तो 1 बाय 1 तो टाइम हो गया तो आधा घंटा प्लस लग जाएगा। हाँ छोड़ दीजिए। समझ जनरे कलर टाइम लगेगा ना, और 5 मिनट के तो चले এটা দিটা हाँ गोटा गोटा ठीक है चलो हाँ करो। थोड़ा धीरे दबाना बाबा, थोड़ा धीरे दबाना। हो रहा है इसका तो कौन कर दे, वो तो सेम एक का एक ग्रुप हो गया, मतलब हो गया ना। कौन कर ना हो गया, क्लिक हो गया। अब हम एक सैंपल का हाइड्रोस्टूडियो कर लेंगे तो कोई बात नहीं, जे कोनो एनी सैंपल हो गया। गुड, क्लैप 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 क्लैप। अच्छा अभी आज सैंपल का बाहर कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा क्या? गुरु जी तुम बताओ, मेरे को मरवाओगे भाई? सरस्वती फटाफट ले लो और कुछ करना नहीं, सैंपल्स को ले लो। मैं एक ही सैंपल का करवा देता हूँ, ठीक है? जो भी सैंपल है एक इक्वली का ले लेता। सुनो अभी हम क्या करेंगे, ज्योति आ जाओ। ओके सो नाउ व्हाट वी विल डू हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग। ठीक है, तो हम लोग एक ही सैंपल का करेंगे। धीरे कर। अच्छा सो दिस इज योर टर्न डन। मैं पहले दिखा देता हूँ क्या डेटा आते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं करूंगा। तो कौन ग्रुप ना तो लाभ पड़े सबसे लास्ट वन सर गुरुदेव हो गया ना ये वाला, ठीक है? तो एक तक मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये तुम्हारा हो गया स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन। अब क्या आते हैं, ये एग्जिट कोड 0 मतलब बाइनरी में क्या होता है 1 और 0 ना। 1 मतलब यस, नो 0 मतलब नो, फिनिश मतलब यहाँ पे 0 होता है एग्जिट कोड। 0 मतलब एग्जिट, 1 स्टार्ट। हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुका। डेटा तुमको क्या मिलेगा मैं दिखा रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं देखो दिखाऊंगा। ये तुम्हारा ग्रुप सी का है ना, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो पूरा आएगा ना, ये कलर इन्फो आएगा, कैसे प्लॉट फॉट कट करना है वो मैं बाद में सिखा दूंगा। पहले मैं एक काम करता हूँ थोड़ा, क्योंकि नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैं एक ही सैंपल का करवा देता हूँ तुम लोगों को, बाकी मैं बता दूंगा कैसे करना है। नहीं तो आज तो टाइम अगर मिलेगा तो बता देंगे, क्योंकि टाइम लगेगा। एक एक चीज का वो एनालिसिस करना है। अरे भाई टाइम तो लगता है ना, टाइम तो लगता है। अंजलि क्या करूंगा बोलो, मेरे को थोड़ा बोलो भाई कैसे प्रैक्टिकल करवाना है, मेरे को आइडिया नहीं है। सर मैंने नहीं बोला, नहीं वही जो बोलेगा आई कांट हेल्प यू, इतना कम टाइम प्रैक्टिकल। अच्छा ये हो गया। अब हाइपरस्पेक्ट्रल का मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग है कि हम लोग ये सैंपल है, इसका हर एक पिक्सेल में फ्रॉम 340 to 830 the things will be taken, मतलब the spectral data will be taken। इसका सबसे यूज होता है डिफेंस में। ये पहले आया था यूएस, जब ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ था। तो ये होता है ना कि एरियल टेक्नोलॉजी, मतलब ड्रोन से हम कैमरा ये करते हैं, तो थर्मल इमेजिंग एंड थर्मल इमेजिंग से कॉन्सेप्ट है हाइपरस्पेक्ट्रल का। वो लोग क्या करते हैं, हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करने के लिए हर एक मूवमेंट का, हर एक पैर का फिर फीट का, वो लोग स्पेक्ट्रल डेटा लेते हैं। It is a very cumbersome approach, but it's if you use machine learning algorithms जो अभी सर किए हैं, you will get a lot of detailed information about color। हम लोग क्या करें यहाँ पे, मतलब RGB से कन्वर्ट करें ना, बट उस पर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, मैं फटाफट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे सेम राइट करना, रन करना है। ठीक है, रन तो सेम चीज है, सेम इंटरफेस, बस उसको टाइम लगेगा। ये टाइम लगती है, इसका टाइम देखिए। ग्रुप के बाद कौन है? ग्रुप फोर बी रेडी, ग्रुप फोर बी रेडी। खड़ा हो, बोलो आएगा तो हो, तुम लोग आ जाना। अच्छा इसमें क्या नाम दूंगा, इसमें ये एक ही सैंपल है तो हम लोग करेंगे ग्रुप 3A। मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ, तुम लोग समझ लेना। मतलब ये कर रहा हूँ ग्रुप 3_A अंडरस्कोर है, ये एक ही सैंपल है, _1 कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन। सो ये एक ही चीज है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड कॉलम करेंगे, ये वाला हो गया। यहाँ पे अलग बनाना है, दैट्स अ गुड। तो लोग बताए नहीं मेरे को, गुड, वेरी गुड।
क्या होगा? अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा ना उसके लिए, क्योंकि अलग एक्सपेरिमेंट है ये सब तुमको बोलना चाहिए फटाफट। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज फोटो हो गया। अब सेम चीज हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम करते हैं, याद रखना 81+80, जितना ज्यादा कर हाइपर स्पेक्ट्रल में उतना डिटेल कवरेज मिलेगा। सो नॉर्मली हम लोग 81, तुम लोग 171 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। So why not 151 बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें एनालिसिस करना फिर और डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट लेते हैं। इससे कोई मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि बस यही मतलब यही लेना पड़ेगा, बट दिक्कत है कि तुमको एनालिसिस करने के लिए बहुत टाइम लगता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट एनालिसिस एवर इन द, हम लोग अभी तो इमेज आ जाएगा कोई अलग अलग बात है, हम लोग को पहले स्पेक्ट्रल से निकालना पड़ता था, तो वो अभी उठ चुका है। तो 80 स्टैंडर्ड अभी ये मान के चलो, ओके करो फटाफट, मैं कर दे रहा हूँ और टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो तुम लोग चिल्लाओगे मेरे ऊपर। देखो कैलिब्रेट ब्लैक हो गया, ठीक है कैलिब्रेट। अच्छा यहाँ पे फोकस नहीं है तो क्या करना है, थोड़ा ये हाँ देखो ये फोकस है, आउट ऑफ फोकस था ये, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके देखो अब बड़ा हो गया ना, क्यू तो नहीं होगा क्योंकि कैप्स्टॉक ऑन है, क्यू हो गया फटाफट। चलो अब नेक्स्ट पार्ट, डेटा सब दे दूंगा, तुम लोग को सिखा दूंगा कैसे रिफ्लेक्टेंस कर्व बनाते हैं, कब क्या करना पड़ेगा, हर एक सैंपल का वो लेके तुमको करना पड़ेगा एक ही कर्व में रिफ्लेक्टेंस प्रोफाइल में। पेपर है उससे कैलिब्रेट नहीं कर सकते? क्या व्हाइट पेपर नहीं, व्हाइट पेपर से कैलिब्रेट नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड नहीं है। पेपर तो पतला है तो फट जाएगा, पेपर तो पतला है, तुम सही बोले हो, पेपर तो पतला है, ये तो प्लेकार्ड है ना, क्योंकि इसका कलर इंडेक्स तो ज्यादा है। अगर पेपर में करोगे वो सेलुलोज होगा, उसका भी रीडिंग आ जाएगा यहाँ पे, तो कैलिब्रेट एक्चुअली नहीं होगा। क्या होगा फाइनली, एल स्टार में तुमको वेरिएशन नजर आएगा, यही होता है पूरा पेपर में जब करोगे। दैट्स व्हाई यूज स्टैंडर्ड ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स। सो देखो भाई पेपर में लिखा होता है, हो गया। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसका पूरा सेम एकदम सेम जैसे हम लोग किए थे, फटाफट कर देना मुझे, नहीं तो तुम्हारा टाइम नहीं होगा। अच्छा सुनो सरस्वती, ग्रुप 4 का ये निकाल के यहाँ पे रखो, ग्रुप 4 का। ओके सो नाउ व्हाट इज हाइपर स्पेक्ट्रल लीफो। आप पहले ही देखो यहाँ पे एक में गलती किया, देखो यहाँ पे रीजन नहीं है, गुड, यहाँ करेंगे, देखो रीजन में लगा दिया, देखो रीजन में लगा दिया हम लोग, ये करते करते हो जाएगा। अब क्या करना है, बस क्यू दबाना है। अब देखो देख देखो यहाँ पे कोड चल रहा है, देख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है, ये तुम्हारी इटरेशन से कैसे मतलब रिपीटेशंस, लूप जैसा तुम पढ़ते हो ना, फॉर व्हाइल डू व्हाइल ऐसा। ग्रुप 4 में रेडी। अच्छा अब क्या करना है, स्पेक्ट्रल इमेज, ये सबसे टाइम लगता है, बस इसमें क्लिक करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, तो टाइम दो मैं हो जाएगा। इसमें क्या तुमको आएगा, स्पेक्ट्रल इमेज, मतलब क्या आपको करता है एक्चुअली, ये जो हम स्पेक्ट्रल इमेज लेते हैं ना, इससे वो हर एक इमेज का वो एक हीट मैप बनाता है, हीट मैप लिख लो ये। बेसिकली द हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रिएशन ऑफ हीट मैप, by the creation of heat map in each and every wavelength using the pixel information. ठीक है हो गया, ठीक है तुम लोग चले जाओ, हो गया, मैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसका, वेट करते हैं। What is this behavior? ये टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है तुम लोग चले जाओ। ग्रुप 4 ये बाबा ये ले लो, नहीं कोई दिक्कत है, ग्रुप 4 ग्रुप चिकन ले लो ये, अभी रुको, हाँ ये ग्रुप 4 का ग्रुप, हाँ मैं दे रहा हूँ सैंपल दे रहा हूँ, हाँ हो गया। ग्रुप 4 का ट्री कहाँ है, ग्रुप 4 का ट्री, हाँ एपिसोड दिखा दिया, हाँ दिखा दे, एक साल बंद कर देता हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर, मैं भी उठ नहीं पाऊंगा सर अभी। चलो गुड, ओके सब आ जाओ, एक काम करो, अभी रिकॉर्डिंग तो बंद हो गया, और बहुत सबाई के एदिके আছে। Hello and a very good morning to all of you guys. Today in this video we will discuss how can we plot the colorimetry data that we have got from the practical. So first of all
I think that you will get all the data. So there are 5 groups: group 1, group 2, group 3, group 4, and group 5. Okay. So the basic thing is that we already have studied that in colorimetry we will be able to get the color information or the information about the different color attributes of a sample. Now there are 2 files. One is called the colorimetry and hyperspectral. So you will be concerned only about the colorimetry and especially about this file, that is the color form. So basically this is a colored file or a colored Excel file which contains all the values or data that are related to the this one. So first I'll open this Excel file and I will show you how can you arrange the raw data into a form that is very necessary and important for you guys, so that you can plot the graph accordingly. Okay, so let it open and then we will come to the following conclusion: how can we plot the graph in origin, and then how can we export the graphs and paste it in our practical files. So this is a sample. So what we have done is we have taken 3 readings of the same sample and this is called triplicate. This is basically called triplicates. Triplicates means when you are taking the same experiments data 3 times, that reduces the variability or the error rate of a data. Okay. Now the thing is that you have been given 6 samples of 3 readings. That means you have to separate the readings. So we are concerned only about these. Okay, I'm highlighting it here, and about this. Okay, so what we will do is we will copy and paste it in a separate sheet. See, L star, A star, and B star. So remember that this one is your raw data. Raw data means the data that we have got from the experiments. Okay, raw data. Here, so you can highlight or you can do whatever you like. Now how will you calculate the average? So I'll just erase this part and then I'll show you how to calculate it. See, first what you do is equal to AVE. Okay, first is equal to average. So here average is there. Simply you select 1, 2 and 3, close the bracket and simply press enter. You get the average. Now what you do, you drag sideways. So you will get all the averages. Now what you do, standard deviation equal to STDEV bracket. What you do is simply go for this. So you will get the standard deviation here. So we have already got this particular file. So I have already done the things that I can explain you. So in this way you have to calculate the L star, A star and B star standard deviation and average values for each sample. Okay, for each sample. So I'll just last I'll do it like this. That is better for you. Average and standard deviation. Okay, so okay, so now it's okay. Now we'll open origin. So I'll share the link for origin. Basically it's present in the inactive Output software vault. You need to follow the instructions and act accordingly. So you will simply type origin here. So after installation, and you have to open it. So this window will appear. So basically it will be accessible only from the institute net. So remember this, that if you want to access the origin, basically you have to use the institute internet or the institute ethernet or the Wi-Fi in order to get the access to the origin software. So this is basically a graphical software where we basically plot graphs and do the data analysis of the particular data. So this is data. Okay, now the thing is that
you need to do the graph individually for all of these samples. Okay, this is very important to note. So what you do, you simply you copy this, and you just what you do is first you copy it. So L star will copy here. So simply we will go for this. So this is the, now you can increase the columns like 1, 2, 3, 4. Let's say this is the standard deviation, so we'll just control X, control V. That means this is the L star. Then what to do? You go here. Now just simply copy for the timing. You go here. Again you paste. Then you will control X. I'm gonna cut from there and paste it there. Okay. So now what you do again? The same thing. You go make a plus sign. Okay. Now you make a plus sign for a column addition. You take this simply put X and put V. Now here you are putting as GG5E. So what you will be doing is, so you will be first doing the L star of all the parameters. So that is L star, A star and B star. That is how will you plot. So this is the way you can do it. Now you have to plot for all samples. Okay. Now for that what you need to do. So this is L star, this is A star, this is a B star. Like that what you do, LAB, 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 you have to do it. So I'll show you one by one how to perform it. Okay. This is a little bit tedious, it will take some time. So what to do, this is your Android, this is your basically origin. So what you do is you simply copy it. Okay, so paste it. So you have to, what you have to do is you have to copy this is the L star. Okay, so this particular thing is L star, A star and B star. Now this has to be done for all the 6 samples. That is very important to note. All the samples that you're getting basically. Second I'm doing. It will take some time, so you have to bear with that. Okay. 1, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you have to do all things. So you can do like this. This is how much your GG, like let's say what is it, group 5E. So let's say this is a group 5 E dash. So what you do is you dash simply here as group 5 E dash, group 5 E dash. Okay, you have done that already. Now what will do for what? Now you have to do for the other samples as well. Clear? So this is your L star, this is your B star, this is sorry A star, and this is a B star, and these are all the standard deviations. There is one you do once you do it basically. This is standard deviation. Okay, this one. So first, second standard deviation, third, and fourth. Here this part is standard deviation is there. Clear? Now I have a plot for all samples. Let's say I'm writing for GR group 5 1. Okay. So we'll take the average value. Okay, so what we've got is 55 point. Okay, so where is 55 point? So 55 for how much? It's 523
and we have 0 point something, that is a mother. So you have to do like this for all samples. That is, first you have to do L star, then A star, then B star. Okay, I'll show you another reading that will be more clear. So you have to plot for all this. So what you do is, I'll show you another one. Okay. So you get the values. So now right now I'm doing it. Now what you will do is, first you make sure that A, B and C, this is your column, this is your column, this is your column. Now what you do is, you have to simply select it, analysis, pixel based, so this is not required. Okay, so here what we'll do is, we'll simply plot a bar graph. See, this is how you will basically be able to clear your doubts. There's L star, A star and B star. I've done only for 2 samples. You have to do for all samples. Now how can you make bold? You can make bold by the option, basically by the institute. Okay, so this is the way by which we will plot, or basically like plot any kind of the graphical data. Now in order to export, what we will do, we will simply export graphs, open dialog. Okay, and in the open dialog, what will happen is that it's very important to understand. First, you have to make the field steady. What is it? Add a postdoc. Okay, so you can choose any files. Okay, and then you will simply so what you do is, let me just keep it in the desktop so you can see. Okay, and ultimately what you do is, you check everything,